आज के वीडियो में फिर से हम लोग एमसीक्यू करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूज़ को बढ़ाएं। कमेंट भी करें अगर आप लोग को लगता है कि मैं कुछ अच्छा पढ़ा रही हूँ और आप लोग के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें मेरे वीडियोज़ को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और कुछ फॉलोवर्स भी नहीं बढ़ रहा है अभी तो, और कंटेंट डालने में डाटा भी लगता है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी करो, व्यूज़ भी बढ़ाओ, क्योंकि आई थिंक अगर कोई ये क्लास करेगा तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल ही होगा और पक्का सिलेक्शन कंफर्म है। मैं इसको करवा के, ये बुक ख़त्म करवा के फिर से इसको स्टार्टिंग से रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब हो जाओ इस चैनल से। मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस मीन्स means block in blood flow from atrium to ventricles. B होगा. Priority based management in unconscious patient is clearance of airway. Fever, headache and stiffness in the neck are the special symptom of which disease? Meningitis. Which of the following condition is manifested due to increase in intraocular pressure? Glaucoma. An abnormal increase in number of cells in a tissue is called hyperplasia. The full form of burn used for kidney function test is blood urea nitrogen. Which of the following is not included in lipid profile? इन सब में से कौन सा लिपिड प्रोफाइल में नहीं इंक्लूड होता है? SCOT, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक। SGOT का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक। उसके बाद अब व्हाट इज़ नॉट गिवन इन एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन? एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन होगा तो क्या नहीं देंगे हम लोग? सैलिसाइलेट्स नहीं देते हैं रिएक्शन होने पे। एड्रेनलिन तो दिया ही जाता है, फर्स्ट चॉइस होता है। हाइड्रोकॉर्टिकोसॉन भी एलर्जी में देते हैं और एंटी हिस्टामाइन भी एलर्जी में देते हैं। एनाफाइलैक्सिस मतलब एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लामेशन ऑफ गम इज कॉल्ड, गम के इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं पेरिडोंटाइटिस। एक्सचेंज ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली अनरिलेटेड in animal of same species is called allograft. After abdominal surgery, what does abdominal bloating and absence of bowel sound indicate? Paralytic ileus. Which of the following is not a clinical feature of anorexia nervosa? इन सब में से anorexia nervosa का clinical feature कौन सा नहीं है? Increase body weight. Activated partial thromboplastin time is prolonged in, ये prolonged होता है हेमोफीलिया में। The condition in which a patient whose spinal cord has been injured from above the neck and which has impaired his or her ability to breathe is called what? Is called quadriplegia. In which of the following condition there is no loss of body weight? इन सब में से किस कंडीशन में बॉडी वेट का लॉस नहीं होता है? यूरेमिया में बॉडी वेट का लॉस नहीं होता है। The reflex action of toes that indicate abnormality in motor function, motor control pathway originating from cerebral cortex is called Babinski reflex. Which of the following causes cell injury? इन सब में से सेल इंजरी का कारण क्या है? हाइपोक्सेमिया, ड्रग एंड केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट, ऑल ऑफ द अबव. Which of the following drug is given by sublingual route for the management of angina pectoris? Nitroglycerin. Which of the following is not a clinical manifestation of diabetes? Hypernatremia. The sign of hyperthyroidism, Graves' disease, is
tachycardia, systolic hypertension, weight loss, all of the above. Abnormal protrusion or projection of an organ through a big spot in the abdomen is called hernia. The disease caused by deficiency of insulin is diabetes mellitus. The best diagnostic test for peptic ulcer is endoscopy. The test that is most specific for myocardial damage is troponin 1. The appropriate position for a patient for performing abdominal paracentesis is Fowler's position. The organism that causes gas gangrene is Clostridium perfringens. The most dangerous or fatal burn is inhalation burn. The symptom of scabies is intense itching, presence of burrow, redness and swelling, all of the above. स्कैबिस एक स्किन का इन्फेक्शन जिसमें इचिंग होता है, बम्प्स बन जाते हैं, स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है. द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ सबड्यूरल इम्पाइएमा इज स्ट्रेप्टोकोकाई pneumonia. Which of the following is not a clinical feature of nephrotic syndrome? इन सब में से नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्लिनिकल फीचर कौन सा नहीं है? वो है हाइपोलिपिडेमिया. Which of the following is not an indication for tracheostomy? ये होगा डिस्फेजिया. कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ट्रेकियोस्टोमी आर. ट्रेकियोस्टोमी के द्वारा कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? ट्रेकिया, इसोफेगियल फिस्टुला, ट्रेकियोस्टेनोसिस, इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव. Which one of the following is called an inflammatory disease of skin? Inflammatory skin का disease कौन सा है? Psoriasis. The inflammatory disorder of sebaceous gland and their hair follicle is called acne. In which disease the heart appear boot shape in chest X-ray? Tetralogy of Fowler. Chlamydia may be caused by trachoma, salpingitis and non-gonococcal urethritic conjunctivitis, all of the above. In the medical management of epistaxis is not included use hot water bottle. The management of post epistaxis includes insertion of posterior plug, anterior nasal packing, use of antibacterial agent, all of the above. हमें क्या? The most common complication of chronic inflammatory bowel disease is obstruction. The nursing care of a burn patient include fluid replacement according to prescription, maintenance, clear airway, prevention of infection, all of the above. In which of the following disease there is tendency for the pulse rate to decrease? Typhoid fever. A patient receive a blood transfusion, begin to witch and have hives and the skin become flushed. The nurse recognized that these are all characteristic symptoms of allergic reaction. What should the nurse use to protect skin surrounding the patient colostomy opening? Skin barrier. In which of the following condition hemorrhoid may occur? इन सब में से किन condition में hemorrhoid होगा? In pregnancy, in portal hypertension, in carcinoma rectum, all of the above. Removing a lung completely from body is called pneumonectomy. Goinometer is used to estimate
Range of motion of joint. Which surgical procedure is performed to reduce the pressure in compartment syndrome? Fascectomy. Fracture of the distal radius is called Colles fracture. Kaposi sarcoma is associated with human immunodeficiency virus. Which eye disease is related to complication of oxygen administration? Retrolental fibroplasia. Diagnosis of pneumonia includes blood culture, chest X-ray, sputum culture, all of the above. Fractures are managed by immobilizing the affected part, traction, analgesic, all of the above. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक भी. और अगर आप लोग के लिए कंटेंट हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट करो कि ये हेल्पफुल है, ताकि मैं और भी अपलोड करूँ और मुझे लगे कि यह आप लोग के लिए हेल्पफुल है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.